you all are doing well. So let's begin with chapter number 40 of let's begin with chapter number 11 of GK for class 3rd and the name of the chapter is our solar system. So जैसे कि हमें पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स, मीटेरॉइड्स, हेवनली बॉडीज और बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. सो इस चैप्टर में हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, राइट. सो लेट्स बिगिन. इन दिस ग्रिड फाइंड द आंसर्स टू द क्लूज गिवन बिलो. तो हमें पहले ये जो क्लूज दिए हुए हैं इनके आंसर्स ढूंढने हैं और उसके बाद जो आंसर्स हैं उनको हमें इस ग्रिड में भी फाइंड आउट करना है, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन which says the planet with the most number of rings around it. तो ऐसा planet जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे rings होते हैं, right? So that planet is known as Saturn and we all are aware of that कि Saturn के around ही बहुत सारे rings जो है वो होते हैं, right? So let's find out Saturn in the grid and we can find out Saturn over here. So Saturn, Saturn. Next is the second one, the planet farthest from the sun. तो ऐसा planet जो कि sun से बहुत ही ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा दूर है, right? So it is Neptune, right? Neptune जो है वो सबसे ज़्यादा दूर है sun से. That is why it is also known as the coldest planet. So let's find out Neptune, and Neptune is over here. So let's highlight this Neptune, Neptune, Neptune. Next, the blue planet. We all know that our Earth is the only planet जो blue planet कहलाता है because our Earth is the planet जिस पर life है, right? It is known as the blue planet because it contains 70% of water. That is why it appears blue from space, right? So let's find out Earth in the grid and it is given over here. E-A-R-T-H, Earth. Next, the fourth one, a dwarf planet. एक ऐसा planet जो कि खो चुका है, right? So we all know कि एक planet हमारा Pluto है जो कि universe में कहीं खो चुका है and let's find out Pluto in the grid and it is given over here. P-L-U-T-O, Pluto, right? Next, the hottest planet, right? So hottest planet जो है वो कौन सा consider किया जाता है? It is considered as Uranus, right? It is considered as Uranus. So let's find out Uranus over here in the grid and Uranus is given over here. U-R-A-N-U-S, Uranus. Next, the largest planet. अब जो largest planet है वो कौन सा consider करते हैं हम लोग, right? So it is considered as Jupiter. Jupiter is the largest planet in our solar system. So let's find out Jupiter over here. Part of the solar system. The solar system का star हम लोग किसे कहते हैं? तो it is obviously the sun. Sun is known as the star of solar system. So let's find out sun in the grid and it is given over here. Sun, right? Next is the planet which spins on its side. तो एक ऐसा planet जो कि spin करता है अपनी side पे, right? So it is considered as Mars. So let's find out Mars in this grid and Mars is given over here. V-M-A-R-S, Mars. So the planet which spins on its side. तो एक ऐसा planet जो कि अपनी side पर ही spin करता है, right? So it is known as Venus. So let's find out Venus in the grid and Venus is given over here. V-E-N-U-S, Venus. After that, next we have the red planet. तो रेड प्लैनेट वी ऑल नो कि मार्स जो है उसको हम एज अ रेड प्लैनेट कंसिडर करते हैं, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट Mars in the grid and we all can see Mars is given over here. So that is the correct answer. After that, next we have
स्टडी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ऐसी स्टडी जो एटमॉस्फेयर के बाहर की होती है, राइट, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर की चीज़ों की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी, एंड एस्ट्रोनॉमी इज गिवन ओवर हियर, astronomy, right? So that's all for this chapter. I hope you all have learned more about the solar system and its planets, right? So thank you so much and have a great day ahead.